today's scripture is Psalms chapter 139. और आज के जो सहाइफ है खुदा के कलाम में से वो है ज़बूर की किताब 139 बाब 139. 139 बाब 139 verses 1 to 10. ज़बूर की किताब 139 बाब 1 से 10 आयत 139 बाब और 1 से 10 आयत. Okay. Are you on it? Yes. Okay. 우리 시편 139편 1절에서 10절입니다. Okay. Let us read all together. आए हम आवाज होकर 같이 तलावत करें. 읽겠습니다. 시작. ऐ O खुदावन Lord, you have तूने मुझे searched जांच me लिया and और known पहचान me. लिया. You know तू मेरा when I sit उठना down बैठना and when I जानता rise है. up. तू You मेरे discern ख्याल my को thoughts दूर से from समझ afar. लेता है. You तू search मेरे out my रास्ते की path और मेरी and ख्वाबगाह lying की down and are छानबीन acquainted करता है with और मेरी all my सब ways. रविशों से Even वाकिफ before a है. word is देख on my मेरी tongue, जुबान पर behold, O कोई Lord, ऐसी you बात know it नहीं altogether. जिसे You तू have है me खुदावन पूरे तौर पर behind ना and जानता before, हो. and lay तूने your मुझे hand upon me. आगे Such पीछे से knowledge घेर is too रखा है wonderful और for me. तेरा It हाथ is मुझ high, I पर है. cannot attain it. ये अरफान Where मेरे shall I लिए go from नहायत your अजीब spirit, है. or where ये shall बुलंद I है. flee from मैं your इस तक presence? पहुंच नहीं If I ascend to सकता. heaven, मैं you are there. तेरी रूह से If I make बचकर my कहाँ bed जाऊं in Sheol, या तेरी you are हजूरी there. से किधर If I take भागूं. the wings अगर of आसमां morning पर चढ़ and जाऊं dwell तो in the तू वहां utmost है. parts of the sea, अगर मैं पाताल even there में your बिस्तर hand shall बिछाऊं lead me, तो and तू your देख right तू वहां भी है. hand shall hold me. अगर मैं सुबह को पर लगाकर समुंदर की इंतहा में बसूं तो तू वहां भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा और तेरा दाहिना हाथ मुझ पर संभाल लेगा. Amen. आमीन. So today's title is God's reign. और आज के कलाम का जो अनवान है वो है खुदा की हुक्मरानी. It's God's reign. खुदा की हुक्मरानी. We have to deliver this three important things to our next generation. और हमने अपनी जो आने वाली नस्ल है उस तक 3 चीजें पहुंचानी है. Next, please. That is the gospel, prayer, and the talents. और ये है अंजील, दुआ और हुनर. Not just the gospel, but the right gospel to our kids. ना सिर्फ अंजील बल्कि दुरुस्त अंजील, सही अंजील It is अपने very बच्चों के लिए तक. It is very important for us to raise our kids in the gospel. ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों की जो परवरिश है अंजील में करें. If not, when they are grown up, it is unable to change them. तो अगर ऐसा ना हो और हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएं तो हम उन्हें बदल नहीं सकते इस चीज को. How old are your kids? आपके बच्चे कितने उम्र के हैं? They're 15. The elder one is 14 years old. And the younger one. और दूसरा? And the second daughter is 6-year-old. 6-year-old. 14 and 6. Third? तीसरा बच्चा? 5.5. 5.5. Okay. Third one is 5. 5. It's 5. Yeah, she is 5. She is 5. Yeah. So when they're kids, you have to raise them in the gospel. और जब वो बच्चे हैं तो हमने उनकी परवरिश अंजील में करनी है. It's very important to deliver the pure gospel to them when they're young. और ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब वो बच्चे ही हैं तो मतलब छोटे हैं अभी तो उनकी दुरुस्त अंजील में परवरिश की जाए. If not, when they become like adults, like 20s, 30s, we cannot teach them the gospel. और जब वो बड़े हो जाएं, अगर नहीं जब वो बड़े हो जाएंगे
तो 20 या 30 साल के, तो फिर उनकी परवरिश करना दुरुस्त अंजील में ये मुमकिन नहीं रहेगा. Their thoughts and minds will be fixed already, तो and we cannot change their hearts. क्योंकि उनका दिमाग और उनकी सोचें जो हैं वो उनकी उम्र के साथ साथ बढ़ गई हैं और वो पक्की हो गई हैं, तो इसलिए उन्हें बदलना मुश्किल है. Anjil, right? अंजील. And the next one, the prayer. और जो दूसरा है वो है दुआ. We have to Dua. teach them how to pray. हमने उन्हें बच्चों को सिखाना है कि दुआ कैसे की जाए. You know, you guys told us, confessed that our prayer was wrong in the past. तो right? जैसा कि आप दोस्तों ने इस चीज़ का इकरार किया, हमें बताया ये चीज़ कि हमारी जो दुआ थी वो गलत थी, दुआ करने का तरीका ठीक नहीं था. We have to teach them the right prayer when they're young. और हमने अपने बच्चों को ये सिखाना है दुरुस्त दुआ करने का तरीका जब वो बच्चे हैं, बड़े नहीं हुए, छोटी उम्र में. If they are in prayer and the gospel, and then God will let them know what are the things that God has given to them. तो जब वो मतलब अभी अपनी जवान उम्री में उन्हें हम सिखा सकें कि खुदा हमसे क्या चाहता है और हम कैसे दुआ कर सकते हैं. And they will get their job in that department. और उनके लिए और जिस वो चीज़ में है, जिस वो फील्ड में है, जिस मैदान में, वहाँ पे वो काम हासिल कर सकें. Not the things that they have found, but the things that God has given. ना कि वो मैदान जो कि उन्होंने खुद से तलाश किया है, बल्कि खुदा की तरफ से दिया गया मैदान जो उनके लिए है. If they cannot find them, then they will have troubles in finance all the time. तो अगर वो मैदान जो कि खुदा की तरफ से नहीं है, तो वो फिर हमेशा अपनी जिंदगी में माली मुश्किलात से दोचार रहेंगे. They are not able to support the pastors and the church. और वो इस काबिल ना बन सकेंगे कि वो अपनी कलीसिया या अपने खादमों की कोई मदद कर सकें. So the talents will be revealed when they are in the gospel and the prayer. तो हुनर जो है वो उस वक्त उजागर होता है जब हम अंजील में होते हैं और दुआ में. For example, King David, you know him, right? और मिसाल के तौर पे बादशाह जो दाऊद बादशाह था, He used to be a shepherd. दाऊद बादशाह जो था वो शेफर्ड चिराग करता था, चरवाहा. Yeah. But you know, he was in the gospel and the true prayer, right? पर वो चरवाहा तो था, पर वो अंजील और दुआ में था. So he learned how to protect the sheep from the animals, right? तो दाऊद नबी ने ये चीज़ सीखी, उसका ये हुनर बना कि उसने अपनी बकरियों को खतरनाक जानवरों से कैसे बचाना है. So with that skill that God has given him, he beat Goliath up, right? और वो हुनर के वसीला से जो कि खुदा ने उसे दिया, जो वो सीखा, तो ईमान के वसीला से वो उसकी तरक्की हुई. And through that, he became a soldier and at the same time a king. और मतलब इस हुनर के वसीला से वो सिपाही बना और फिर बादशाह. And he saved his tribe, his country. और बादशाह बनने से उसने अपने कबाइल, अपने मुल्क की नजात का बाइस बना, उसको बचाया. Can you understand? आप ये समझ सके हैं? If he was just a general shepherd, he had to, maybe he would have to just do the shepherding. That's it, for life. और मतलब अगर आप सिर्फ चरवाही होते तो शायद आप पूरी जिंदगी गलाबानी चरवाहा करते. If you're there, you have to worry about your finance. और अगर आप यहाँ पे ही रहते इस चरवाहा के मैदान में, तो हमेशा हम अपने माली मुश्किलात के बारे में सोचते. What can I do for making a living? मतलब मैं क्या और करूं अपनी रहने को अच्छा करने के लिए. You'll be always stuck in that problem. हमेशा आप इसी मसला में रहते हैं. So teach your kids.
तो हमने अपने बच्चों को ये सिखाना है। Especially he doesn't have kids, but you have 3 kids already. तो खासकर मेरे तो बच्चे नहीं है, लेकिन आपके जो हैं वो 3 बच्चे पहले से ही खुदा ने दिए हैं। Pastor, I am in Korea and they are in Pakistan. No, we have online system. नहीं, पादरी साहब मैं कोरिया में रहता हूँ और मेरे बच्चे तो पाकिस्तान में है, तो मैं कैसे उन्हें सिखाऊं? नहीं, पर हमारे पास एक ऑनलाइन निज़ाम मुरतब किया गया है। Now you know how the gospel. You know what is the gospel. और right? अभी आप जानते हो अंजील को। अंजील क्या है? Do you think your family knows the gospel? आप क्या समझते हो कि आपका घराना जो है अंजील से वाकिफ है? If they're not, you have to deliver the gospel to अगर नहीं your तो आपको family. जरूरी है कि आप अपने घराने को अंजील की मुनादी करें, अंजील का बारे में बताएं, Especially to your kids. खासकर अपने बच्चों के लिए, Especially to your wife. खासकर अपनी बीवी Right. के लिए। Because your wife is the one who raised your kids, right? और क्योंकि आपकी बीवी ही वो है जो कि बच्चों को परवरिश करती है। Then we have the hope. फिर We हमारे have the पास future. उम्मीद है, मुस्तकबिल है। If not, we don't have the future. अगर नहीं तो फिर हमारे पास मुस्तकबिल नहीं है। Can you understand this? आप समझे हैं ये? Okay. 아직 여기 아닙니다. So you have to deliver 3 important things. तो हमने 3 अहम चीजें जो है Can वो you get back? पहुंचानी है। Oh yeah, that's the one. This one? No. Get back to the next, please. No. Next. Yeah. 3 things. You have to deliver this to your kids. तो हमने मतलब 3 ये अक़साम की ईमान है जो कि हमने अपने बच्चों तक पहुंचाना है। Then how can you deliver this? तो हम ये कैसे पहुंचा सकते हैं? You have to enjoy this first. सबसे पहले हमने इसमें खुद खुश रहना है। If you don't enjoy them, how can you deliver अगर them? आप खुद इसमें खुश नहीं इन अंजील के इन असूलों पर, तो आप कैसे दूसरों तक ये पहुंचा सकते हैं? Every day, stay in the true gospel. और हमेशा हर रोज दुरुस्त अंजील में रहें And stay in the true prayer. और रहें हकीकी सच्ची दुआ में हर रोज। What is the true prayer? दुरुस्त दुआ क्या है? I need this, I need that, Lord. Please give me. क्या दुरुस्त दुआ ये है, खुदा बाप मुझे ये फलां चीज चाहिए, फलां चीज। Even in Muslims, they pray in the same हत्ता ways. के जो मुसलमान है वो भी इसी तरह की दुआ करते हैं। Buddhism, Hinduism. मतलब बुद्धा या हिंदू जो है वो भी They just seek they want, what they मतलब want. वो हमेशा वो चीज की दुआ करते हैं जो कि उन्हें चाहिए। But what are our prayers? पर हमारी दुआ क्या होनी चाहिए? Enjoying our triune God. हमने हमेशा खुश रहना है, मसरूर रहना है तसलीसी खुदा में। That's the true prayer. यह है हकीकी सच्ची दुआ। We don't need any other prayer. हमें किसी और दुआ की जरूरत नहीं है। If you are enjoying God being with you and you're happy with that, we don't need anything else, right? अगर हम ये दुआ करें कि खुदा हमारे साथ है और हम खुदा के साथ खुश हैं, तो फिर हमें किसी और चीज की दुआ करने की जरूरत नहीं है। Then, खुदा हमारे साथ है। and then you can teach your kids because you have it. फिर आप अपने बच्चों को ये सिखा सकते हैं क्योंकि आपके पास खुदा है। So, this is your mission. तो ये हमारा मंसूबा है, मकसद। Do you understand this? समझ रहे हैं आप? Do you really understand this? आप वाकई में समझ रहे हैं? Then that's it for today. तो अगर आप ये वाकई में समझ रहे हैं तो फिर आज के लिए ये काफी है। We are done now. तो फिर हमारे लिए ये काफी है। But still we have to share the gospel today. पर फिर भी Okay. हमें अंजील के कलाम की तशरीह की जरूरत है। Let's go to the next page. आए हम दूसरे पेज की तरफ चलते हैं। We always look at our surroundings. हम हमेशा अपने माहौल को देखते हैं। So watch out so you don't fall into the unbelief. तो मैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गलत ईमान में ना पड़ें, गैर ईमानदार। This is our biggest enemy of our life. गैर ईमानदारी जो है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। But God, बगैर ईमान के। He knows every single move I take. पर right? खुदा जो है वो कादर है, वो हर चीज से वाकिफ है। हर
एक हमारे कदम से खुदा वाकिफ है। So today's title, we said, He is the ruler of life and death, blessing and curse. और आज के कलाम का ये अनवान है कि खुदा जो है वो हुक्मरान है जिंदगी और मौत का और लानत और बरकत के। And He knows what we have in our thoughts and mind. और बेशक के खुदा जानता है कि हमारे सोचों और हमारे दिलों में क्या है। Do you think I can read your thoughts? क्या आप क्या समझते हैं कि हम खुदा की हम तुम्हारी सोचों में जो चल रहा है हम वो जान सकता हूँ मैं? Yes, I can read your thoughts. क्या मैं तुम्हारी सोचें जान सकता हूँ? I can't. नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। If I could read your thoughts, you cannot stand upon me, right? अगर मैं तुम्हारी सोचें जान सकूं कि तुम क्या सोच रहे हो तो तुम मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते। Maybe you will run away from me, right? तो शायद तुम भाग जाओ। But what about God? पर क्या कहेंगे खुदा के बारे में? He is reading everything, right? खुदा हमारी हर एक की सोच से वाकिफ है। What are you thinking, Lazar? He is reading everything, right? तुम क्या सोच रहे हो लाजर? खुदा ये जानता है बेशक। It is very, very, very shameful. ये बड़ा ही शर्मनाक है। But on the other hand, what do you think? We are safe in His hands. पर दूसरी तरफ क्या कहेंगे कि हम खुदा के हाथों में महफूज हैं। So do not fall into the unbelief. तो मैं आप अजीजों में आप दोस्तों को बताना चाहता हूं कि गैर ईमानी हालत में ना पड़ें। Let's get into the content. आए हम अब मजमुआ की तरफ चलें। Okay. So the first faith that we must possess is this. तो पहला जो हालत है जो कि हमने थामे रखनी है वो ये है। The faith to survive in all circumstances. सबसे पहली अकीदा हमारा ये है किसी भी हालत में हम ईमान में रहें, हर हालत में हम ईमान में रहें, हालात कोई भी हो। If you don't have faith, what happens? अगर मिसाल के तौर पर अगर आप ईमान में नहीं तो क्या हो? We can't do the world evangelization. तो फिर हम आलमी बशारत नहीं कर सकते खुदा की मुनादी दुनिया में। Because we will end up wrestling with our just own personal problems. क्योंकि हम उसी लड़ाई में हार जाएंगे जो कि हमारी खुद की लड़ाई है जाती। Look at the Bible, next page. आए अभी हम बाइबल हमें क्या बताती है ये जानते हैं। There are those very important individuals in the Bible. और बाइबल हमें ये बहुत से अहम अशखास के बारे में यहाँ पर बताती है। Abraham, by the faith he has, he saved his family. अब्राहम अपने ईमान के वसीला से अब्राहम ने अपने घराना की नजात का बाइस बना। Just one person. मतलब एक शख्स की वजह से। Even Joseph. हालांकि यूसुफ, He was a slave, right? यूसुफ जो था वो गुलाम था। But he saved Egypt and the world and his family. और यूसुफ ने ना गुलाम होने के बावजूद यूसुफ ने अपने मिस्र अपना घराना को की नजात का बाइस बना। Just one person. मतलब एक शख्स की वसीला से। Are you the one person? I am praying. You're the one, Amen. right? We just Yes. need one person. हमें एक शख्स की जरूरत है। Elijah, और एलिया, right? He's the one who has the faith and saved Israel from powerful nations. और एलिया नबी जो था वो भी एक ही शख्स था जिसका ईमान था और जिसके वसीला से उसकी पूरी कौम को नजात मिली। You know the early church, आपको पता है अज़ली कलीसिया Peter and the disciples. और पतरस के साथ जो शागिर्द थे, The early church, which was the minority, finally conquered the entire Rome. और मतलब ये जो अज़ली कलीसिया थी, अब इब्तदाई कलीसिया, ये बहुत ही कम लोग थे। So तादाद में बहुत कम थे, लेकिन ईमान के वसीला से वो पूरे रोम पे गलबा पाया। we need just one person who has the faith.
और इसलिए हमें सिर्फ एक शख्स चाहिए जो कि ईमानदार हो, Next ईमान में हो। page. So what is our faith? तो फिर हमारा ईमान क्या है? We need the faith to salvation, right? हमारा ईमान बेशक होना चाहिए नजात के लिए, But we are saved now पर हम already. नजात याफ्ता हैं। So what kinds of faith do we need now? और अब हमें किस किस्म के ईमान की जरूरत है? The faith in God's power in our lives. और हमें ईमान चाहिए, वो ईमान चाहिए कि खुदा की ताकत हमारी जिंदगियों में काम करे। The faith to believe in God's power in our lives. वो ईमान जो कि खुदा की ताकत को हमारी जिंदगियों में काम करने दे। We shared the title today. जैसा कि आज हमने खुदा के कलाम में से अनवान जो की तलावत की पढ़ा। He is the ruler of the life and death. खुदा जो है वो हुक्मरान है जिंदगी और मौत का। And blessing and curse. और खुदा हुक्मरान है जो कि हमारी जिंदगी में बरकत और लानत आती है। Everything is in his hands. हर चीज जो है वो खुदा के हाथ में है। So our remnants, our keys must grow looking at the faith of their parents. और हमारे बच्चे हमेशा मुंतजर हैं हमारे वालिदैन की तरफ वो देखते हैं। Faith is not something that we can teach our kids. ईमान कुछ वो नहीं कि हम अपने बच्चों को सिखा सकें। Faith is something our kids can learn from parents' faith. बल्कि ईमान कुछ ये है कि ईमान जो है हमारे बच्चे अपने वालिदैन से सीखते हैं, वो उनको देखकर। They can just look at your faith and they will learn from you. और बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप को देखते हैं और उनसे सीखते हैं ईमान को। You cannot literally teach this faith to them. आप बेशक के आप खुद से अपने बच्चों को ईमान नहीं सिखा सकते, ईमान का नहीं बता सकते। You know, although the parents make mistakes, हत्ता के जो वालिदैन होते हैं वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में गलतियां भी करते हैं। if the parents have faith, and kids will grow up looking at the faith of the parents. और बेशक के वालिदैन जो हैं रोजमर्रा की जिंदगी में गलतियां करते हैं, लेकिन वो ईमान में होते हैं तो उनके बच्चे भी ईमान में बड़े नशोनुमा पाते हैं। Oh, Pastor, I'm not qualified to teach my kids. पादरी साहब, मैं इस काबिल नहीं कि अपने मैं बच्चों को ईमान सिखा सकूं, ईमान के बारे में बता सकूं। I haven't studied a lot in the school. पास्टर साहब, मैंने तो स्कूल में काफी कुछ सीखा। No, if you have the faith and you are qualified to teach your kids. मैंने स्कूल से नाकाफी हूँ सीखने में, पढ़ाई में मैं नाकाफी हूँ, तो मैं अपने बच्चों को कैसे सिखाऊं? नहीं, पर अगर आप ईमान में हो तो आपके लिए काफी है, आप काबिल हैं कि आप अपने बच्चों को सिखा सकें। It's not teaching, but it's to show your faith to your kids. ईमान अकीदा कुछ ऐसा है कि ऐसी चीज नहीं कि जो हम उस्ताद बच्चों को सिखाता है, नहीं, वो देखने से दूसरा इंसान सीखता है, नजर आता है। Think about this. On the opposite side, the parents are perfect. They have money, they have everything, they're very educated. But if they don't have faith, and kids cannot grow up. और दूसरी जानिब देखते हैं, दूसरे हाथ की जानिब, कि एक और घराना है जिसके उस घराने के वालिदैन जो हैं वो पढ़े लिखे हैं और अहल हैं, पर वो ईमानदार नहीं, तो वो क्या अपने बच्चों को ईमान सिखा सकते हैं, बता सकते हैं? The kids will fall down. बेशक के वो बच्चे जो हैं अपनी जिंदगी में गिरते रहेंगे। So we need that faith. तो हमें ईमान की जरूरत है, इस ईमान की जरूरत है। Trust in God's power. और हमने अपने ईमान को खुदा के सुपुर्द करना है, खुदा की ताकत को अपनी जिंदगी में Despite all the circumstances we face, हत्ता के जो भी बेशक जिन भी मसाइल की हम अपनी जिंदगी में दोचार हैं, remember God, He's the ruler of the life and death, blessing and curse. जिंदगी के तमाम मकाबिल जो कि हम हर रोजमर्रा की जिंदगी में जिनका सामना करते हैं, उनको छोड़कर हमने हमेशा खुदा की खुदमुख्तारी
और खुदा की रहनुमाई को देखना है। Okay, once again. The ruler, he is the ruler of life and death खुदा जो है वो हुक्मरान है जिंदगी और मौत का, and blessing and curse. और खुदा हुक्मरान All है right? लानत और बरकत के। Next page. So now we have to possess the faith to fight the spiritual battle. और अब हमने वो ईमान रखना है, हमारा ईमान वो होना चाहिए जो कि जिस्मानी जंग को भी गलबा पाए। Today we have the very famous popular picture here. और आज जो है हमारे पास ये जो स्क्रीन पर आ रही है ये बड़ी मशहूर तस्वीर है। Deacon Kim drew this picture. डीकन जो है हमारे किम, उन्होंने ये तस्वीर बनाई है। We always fight the physical battles. हम हमेशा जिस्मानी जंग में रहते हैं। Look at the Pharisees. देखें अगर Pharisees, Pharisees, the Jewish people. Pharisees. अच्छा अच्छा, यहूदी लोग जो थे, अगर उनकी हम जिंदगी को देखें, They knew that Jesus rose again from the dead. ये जानते हैं कि ये यीशु मसीह जो है वो दोबारा जी उठे, They were the witnesses. और ये इस चीज के गवाह हैं कि यीशु मसीह दोबारा जी उठे। So he commanded the people tell a lie that Jesus didn't die. और पर वो क्या कहते हैं लोगों को, यीशु, बेशक वो जानते थे कि यीशु दोबारा जी उठे, पर वो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो मरे ही नहीं। Because they knew that Jesus, he literally arise. और वो क्योंकि वो जानते थे कि यीशु जो है वो बेशक दोबारा जी उठा है, पर उन्होंने झूठ बोला। He rose again from the dead. वो जो जानते थे कि वो मर कर जी उठा है। So they thought if Jesus becomes greater and he become famous and popular, maybe our power will be finished. क्यों उन्होंने झूठ बोला? क्योंकि अगर वो ये जानते थे कि अगर हमने ये कह दिया तो फिर हमारी ताकत खत्म हो जाएगी। फरीसी Maybe we will lose our position here. शायद हम फरीसी लोग अपनी जो हमारे ओहदे हैं वो खो बैठे। If Jesus becomes the king of Israel, we are done. मतलब अगर यीशु जो है वो बादशाह बन जाता है इस्राएल का, तो हम तो खत्म हो जाते हैं। So they had to kill Jesus. और तो इसलिए उन्होंने यीशु को कत्ल कर दिया। Even though they knew that Jesus rose again from the dead. बेशक के वो ये जानते थे कि यीशु जो है वो मौत से जी उठे हैं, मौत पे फाते पाई है। That's the physical battle. ये है जिस्मानी जंग। Right. So how can you make Satan down on their knees? तो हम किस तरह से शैतान को उसको अपने कदमों में बिठा सकते हैं? If you stop the physical battle, then Satan will abandon. अगर हम ये जो हमारी जिस्मानी जंग है इसे हम रोक दें तो हम शैतान को नीचे बिठा सकते हैं, उसको घुटनों पर ला सकते हैं। Remember Joseph. याद रखें यूसुफ नबी को। He didn't revenge himself on his brothers or the wife of a Potiphar. और उसने यूसुफ ने अपने भाइयों से बदला नहीं लिया, ये ना कि उस बादशाह से। Do you know the story? Yes. Yeah. He didn't revenge himself on them. मतलब right? उसने किसी से भी बदला नहीं लिया जो कि उस पर जुल्म हुआ उसका। If you do so, Satan will kneel down. तो अगर उसने ऐसा नहीं किया, बदला ना लेने की वजह से शैतान जो है वो बैठ गया घुटनों पर आके। Okay, Joseph, I'm done with you. हाँ यूसुफ, मैं मेरा तमाम हुआ, मैं तुमसे हार गया। Next page. We have to fight the spiritual battle. और हमने जो है रूहानी जंग के लिए भी तैयार होना है, रूहानी जंग के काबिल होना है। Those who do the fight the spiritual battle, they pray when they encounter problems. तो ये जो रूहानी जंग के काबिल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जब वो किसी भी किस्म के मसाइल का शिकार होते हैं तो वो दुआ करते हैं।
when you encounter a problem, do you first pray? जब किसी मसाइल का शिकार होते हैं तो क्या पहले आप दुआ करते हैं? Then you're fighting a spiritual battle. तो फिर आप रूहानी जंग में हैं. It's a proof that you're praying. You're fighting the spiritual battle. तो ये इस चीज का सबूत है कि आप दोस्त जो हो वो जंग में हो, मतलब बस And we don't have रूहानी जंग में. we don't have any time to fight the physical battle because we are busy doing God's work. तो फिर हमें जिस्मानी जंग के लिए फिक्रमंद नहीं होना. क्यों? क्योंकि हम रूहानी जंग के काबिल हैं. रूहानी जंग की काबिलियत के लिए हम जिस्मानी जंग पे गलबा पाते हैं. So no matter what kind of problem you may face, you should pray first. और कोई मसला नहीं कि आप जिस भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जिस तरह के भी मसाइल का शिकार हैं. Next page. And those who have the faith to fight the spiritual battle have eyes to see the church और correctly. वो लोग जो कि रूहानी जंग के काबिल हैं, जिनकी आंख जो है वो रूहानी जंग को देख सकती है, वो इस काबिल हैं कि वो कलीसिया को देखने वाली आंख हो. You know, in the church, generally, people fight each other. आपको पता है कि हमारी जो कलीसिया होती है आमतौर पर लोग आपस में लड़ते रहते हैं. What about in Pakistani churches? Yeah, It's all the same, right? yes, बिल्कुल ऐसे ही है. But if you know how to fight the spiritual battle, you have the right eyes to see the church. पर अगर आपके पास वो आंख है जो कि रूहानी जंग के काबिल है, तो फिर आप चर्च को देखने वाली आंख आपको मिल जाती है कि अपने कलीसिया को में कैसे रहना है. They get far from the useless physical battle. क्यों? जो लोग रूहानी जंग के अहल हैं वो इन बाकी जो बगैर इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं जो कि गैर इस्तेमाल शुदा हैं उनसे दूर हो जाते हैं, उनको नहीं देखते. Every single member of the church looks precious to their eyes. हर एक जो शख्स है जो कि चर्च का मेंबर है वो उसकी आंख चर्च की जानिब होनी चाहिए. Because they know हर एक खास है. Because they know how precious a church is. क्यों? क्योंकि वो ये जानता है कि हमारा जो चर्च है वो बहुत खास है, इसलिए वो भी खास है, वो शख्स जो कि चर्च में है. And they will naturally devote themselves to the church. फितरती तौर पर हम अपने नजराने कलीसिया में लाना शुरू करते हैं. So let us have the faith to fight the spiritual battle. आइए हम ये ईमान रखें कि हम अंजील में रह सकें. Let's get into conclusion. So the last faith that we must take, आखिरी जो ईमान है जो हमारे पास होना चाहिए, the faith to do world evangelization. वो ईमान जिसके वसीला से हम आलमी बशारत पर ईमान रखें. With our own level, we can't do this. हम अपने आप में ये कर सकते हैं, We can't. हम नहीं कर सकते. So be a great vessel, bigger vessel to embrace 237 nations. तो हमने क्या करना है, हमने अपने बर्तन को बड़ा रखना है ताकि हम 237 कौमों को उसमें ले सकें. How big is your vessel? आपका बर्तन कितना बड़ा है? You have to enlarge your vessel to 237 nation level. हमने अपने बर्तन को इतना बड़ा करना है कि हम 237 कौमों को उसमें समा सकें. No, I just have to save Karachi, that's it. मुझे सिर्फ कराची की नजात के लिए काम करना है. That still is a big field. हाँ, ये भी बड़ा मैदान है. But you have to embrace the whole Pakistan. पर नहीं, people. हमने उसे और बड़ा करना है पूरे पाकिस्तान को बचाने के लिए. And the whole Southwest Asians. और फिर तमाम जनूब मगरबी एशिया को. And the whole world, 237 और nations. उसे और ज्यादा बड़ा करना है 237 कौमों की नजात के लिए. So you guys must arise and set a pastor and become the church leader, officers, and raise remnants. और आप दोस्तों को
उजागर होना है, मुतहर्रिक होना है कि हम पूरी आलमी बशारत के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। I'm telling you again, मैं आपको ये दोबारा बताता हूँ, you must arise by yourselves. हमने सबसे पहले खुद को बेदार करना है। We will not help you guys out. हम आप दोस्तों की मदद नहीं कर सकते, You guys arise. आपको खुद को बढ़ना है। This is not our church, this is your church. ये मेरा चर्च नहीं, ये तुम्हारा चर्च है। It's not Korean church. ये कोरियन चर्च नहीं, This is not. This is the church for foreigners. ये जो चर्च है, कलीसिया है, ये गैर मुल्कियों के लिए है। So we will depart one day. हमने ये एक दिन छोड़ देना है, So हमने you- यहाँ से चले जाना है। You guys become the church officer. You guys become the pastor. और आप दोस्त जो हैं वो इस चर्च के जिम्मेदार होंगे, आप दोस्त जो हैं वो पासबान होंगे, पास्टर होंगे इस चर्च के। Raise remnants. और हमने जो बकायात हैं अपनी आने वाली नस्ल उसे बढ़ाना है, नशरुमा देनी है। Pastor, now we are in Korea. How can you do this? पादरी साहब, मैं कोरिया में हूँ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? You have online system, right? आपके पास ये ऑनलाइन निज़ाम है, And one day you will get back to your country. और Right? एक दिन आपने अपने मुल्क चले जाना है, We'll be connected all together continually. और हम राब्ते में रहेंगे लगातार, And we will support spiritually, even if you're in Pakistan. और हम आपको रूहानी एतबार से, हम आपकी रूहानी एतबार से मदद करेंगे जब आप अपने मुल्क में होंगे। And send those remnants to our church again. और हम जो है अपने चर्च में दोबारा दूसरे रहनुमा लाएंगे, And we can raise them as pastors and church officers. और And we will उन्हें send you भी- back. और उन्हें भी हम पासबान बनाएंगे और चर्च के जिम्मेदार, और उन्हें अपने मुल्क में उनके दोबारा भेज देंगे। Can you see the picture? आप ये समझ रहे हैं, इस तस्वीर को देख रहे हैं? The faith for world evangelization. ये ईमान वो ईमान है जो कि आलमी बशारत पर ईमान लाना है, Not इसे just कहते हैं। Pakistani evangelization. ना कि सिर्फ पाकिस्तानी बशारत के पर ईमान, The 237 nations world evangelization. Okay? 237 कौमों के लिए अंजील की बशारत। Let's pray. आए हम दुआ करें। Thank you, Lord, for your grace. खुदा बाप, हम आपके फजल के लिए आपके मशकूर हैं। We want to have the faith to trust in you. मैं अपने ईमान को आप पर, आपके हजूर सुपुर्द करता हूँ, Knowing that you are the ruler of the life and death and curse and blessing, we entrust our lives to you. मैं ये जान चुका हूँ कि आप ही नेको बद की बरकत के लिए हैं, और जिंदगी और मौत आपके हाथों में है। Lord, may you work on us so we can raise the disciples for Southwest Asian evangelization. ऐ खुदा, आप हमारी मदद करें, हमारी रहनुमाई करें, ताकि हम जनूब मगरबी एशियाई लोगों में अंजील की मुनादी कर सकें, आलमी बशारत। May you bless these disciples so they can understand the true gospel and deliver this to their people. और खुदा बाप, मैं आपसे दुआ करता हूँ कि आप इन हमारे ये शागिर्दों की मदद करें, इनकी रहनुमाई करें, ताकि वो अपने लोगों में अंजील की मुनादी कर सकें। May you help us to find the hidden disciples in the field. मैं आपसे दुआ करता हूँ, आप ऐ मेरे बाप, आप हमारी रहनुमाई करें, हमारी मदद करें कि हम जो शागिर्द अभी हम पर नजर नहीं आ रहे, जाहिर नहीं हो रहे, वो जाहिर हो सके। Lord, we give you offering now. और ऐ बाप, मैं आपके लिए नजराना लाया हूँ, May you grant us the economy of light to save 237 nations. खुदा बाप, मैं आपके लिए नजराना लाया हूँ जो कि है आसमानी बादशाहत के लिए और माशी रोशनी के लिए। 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님의 영원하신 사랑과 성령의 역사하심이 오늘 생사화복의 주관대 되시는 하나님을 믿고
영적 싸움을 시작하기 원하는, 세계복음화의 그릇을 갖추기 원하는 이 자는 이제 모든 하나님의 사람들 머리 위에, 파키스탄과 서남아시아와 전 세계 237 나라 위에 지금부터 영원토록 항상 함께 있을지어다. 아멘. 아멘. शुक्रिया. 슈크리야.